Started. Okay, so here is the recording. Good afternoon, everybody. Welcome to Paytm Money's. This is a program. It's an intermediate program on trading and trading in stocks and options. So, what we are going to do in next 4 sessions, that is today, tomorrow, and next Saturday and Sunday. Oh yes, both the language, right? ठीक है, हम लोग दोनों लैंग्वेज में बात करेंगे. तो हम लोग क्या करेंगे कि आज हम लोग बेसिकली टेक्निकलिटीज, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है. लाइक कि कौन सा स्टॉक मोमेंटम में है, कौन सा स्टॉक अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, ट्रेंड क्या है. एंड देन हम लोग क्या करेंगे, उसको ऑप्शंस में, डेरिवेटिव स्ट्रेटेजीज में हाउ टू कन्वर्ट, ये डिस्कस करेंगे. सो टुमारो the second session and the third session is going to be on derivative strategies. So first session is by Manish today. Our guest today is Mr. Manish. So welcome, Manish. If you can open your camera. Yeah, hello everyone. Yes. A very good evening and Great. welcome to today's session. Thank you. So very quickly, let me introduce Manish. So Manish is in the market for more than 25 years, actually. He has been with research desk of many of the brokers, top institutional, side as well, research side as well. So Manish is going to talk, he's going to discuss about strategies, okay, or technical strategies today. So हम लोग ये program को जितना interactive करेंगे इतना ही अच्छा है. So please feel free, ask questions and make it as much, interactive and learning possible. So Manish, I think it's over to you, Manish. Yeah. Okay. So good evening everyone and welcome to today's session. Essentially, and I hope you can see my screen. Yes, we can see the screen. In fact, before starting straight into our topic, I think if you can give a small idea about what's happening in the market nowadays. For last 3 days, we are seeing a downslide after a breakout. So, See, let's face it. It has been a slightly difficult month. I mean, June was difficult. So if I could uh, just open Nifty and just take a look, I'll be able to give you a very good idea of what is happening. थोड़ा हिंदी में भी बोलिए एंड योर हाँ वॉइस ठीक है लाउड कर दीजिए. हाँ जी, वॉइस ठीक है ना? वॉइस थोड़ा कम है. थोड़ा कम है. इफ यू कैन इंक्रीज द वॉल्यूम. 1 second. ऑल गुड. ओके, ठीक है, ऑल गुड, आई थिंक. ठीक है. Yeah. Anyways, okay, so yeah, so I hope you can now you can see my screen and Yes. Okay, let's start with Nifty. We'll start from scratch and I'll tell you why we are in an exceptionally good position if you are a trader and why this current decline could actually be a good spot to get into the market, right? So now see, it's basically if you just take a look and और हम क्या करेंगे, हम as we go along हम इसमें यही निफ्टी पे हम लोग इंडिकेटर्स लगाएंगे और आगे जाते जाएंगे. तो आज का जो बेसिक टॉपिक है जैसे हमने किया था स्ट्रैटेजीज, तो इंडिकेटर्स हम कैसे यूज करते हैं, तो दैट इज व्हाट वी विल टॉक अबाउट. तो देखिए, नाउ व्हाट वी आर सीइंग हियर is Nifty. Now see, look at this, what is happening now. This larger trend is up, so we are in this phase of higher highs and higher lows. So इसमें तो कोई शक नहीं है, at least for the time being, that we are moving higher, slowly. And यहाँ पर there was this sideways action which largely happened during the Israel and Iran conflict. And see, the best part is that we didn't go down despite crude oil behaving in a very erratic manner. लेकिन वो मार्केट्स में उतना इफेक्ट नहीं आया.
See, now what we are seeing here is that this phase, there is this huge thrust. बहुत बड़ा thrust है सी. तो जो लोग ने लास्ट टाइम कैंडलस्टिक्स अटेंड किया था, वो मैंने कहा था कि जब भी आप मार्केट देखते हो तभी सिर्फ रेड और ग्रीन कैंडल्स देखो, मतलब एक बार के लिए सिर्फ नहीं, बट वन ऑफ द थिंग, राइट. आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग कॉल्ड सिर्फ जैसा कुछ भी नहीं होता है. 360 डिग्री एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है. तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे लफली अराउंड लेट्स से एक 15-20 कैंडल हम पीछे जाएंगे, तो notice one thing that wide range candles and they are dominating the landscape, right? See this very long candles. So these are actually uh, buying candles, right? Traders love to buy this sort of candles. और तभी मार्केट में इतना बड़ा कैंडल आता है जब भी एक काफी बड़ा बाइंग होता है. So in the sense that we have broken out to new highs. So we have just broken out new highs. And this decline, I think it is just a short-term correction. See, market doesn't go in a straight line. तो काफी बार थोड़ा उतार चढ़ाव आता है. देखो ये goes up and comes down, it goes up, comes down, goes up, comes down. So maybe a day or two, we could be seeing a reversal. I'm just waiting for some sort of a green candle. कुछ तो होना चाहिए. Or what we can do is that see now we are in an existing trend and it's a very sharp looking trend. तो अगर मार्केट यहाँ से मेरे हिसाब से ये लक्ष्मण रेखा है, आप नोट करके रखो जिसको भी इंटरेस्ट होगा. 25,590, ठीक है, या तो 25,600 ले लो. तो 25,600, okay, this is this resistance zone, very short term on hourly chart. Okay, so if market starts to go up from here, it would be an entry trigger. अगर आप short term player हो, you can simply wait for this move to come higher and keep a stop below this. अगर आप short term player हो तो, right? अगर आप short term player नहीं हो, आप long term player हो, तो I would say lock, stock and barrel, you get into the market. Either through ETFs, that's fine. You can also go through ETFs. You can buy index funds. You can, you can, if you are doing SIP, please don't stop doing it. जो डेटा आया था मेरे हिसाब से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का और जो HSBC का PMI डेटा आया था, आई थिंक इट इज जस्ट अ स्मॉल ब्लिप. बारिश में जब भी हैवी रेन होता है तभी काफी एक्टिविटी देश में कई जगह पर कम हो जाती है. तो उसका मतलब ये नहीं है कि वी आर नॉट प्रोग्रेसिंग. World Bank GDP projections have been encouraging. RBI uh, uh, RBI का प्रोजेक्शन इज एनकरेजिंग. अभी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट्स आना शुरू होंगे. सो दिस इज बिगिनिंग ऑफ जुलाई. तो अप्रैल मई जून के रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे. एक यहाँ पर एक गैप है, वहां पे बाजार में एक रुकावट आ रही है, राइट. सो गैप्स कैंडलस्टिक्स में वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट इट, बट कॉन्सेप्ट है गैप्स का, विंडोज जिसे कहते हैं. तो वहां पर एक रेजिस्टेंस जोन है. तो आई थिंक दैट इफ वी स्टार्ट टू go beyond 25,600, maybe 25,700, I think it will be a good point. Now if we go up, move up higher time frame, we are looking at a weekly. So we are not in a, I mean, by any stretch of imagination, we are not in a declining mode. We should be seeing, right? See, this is a very, very long term channel. So uh, I wouldn't be surprised that by end of this year, maybe December, by Diwali, Y index should not be at 28,000, maybe 28,500 or so. So you play for this move, be patient. It's a slow moving market. It's not a fast moving market. So that's what it is, right? So that is something on Nifty. Anything else you want me to go through? Nay, Maybe Manish, another sector thank you or so something. much to give a beautiful introduction to the market. I think we can start now. Okay, so let's start with the core topic of today. I just change this. Let's start with this core topic. And so I'm just keeping this. I hope I'm not creating this as a full screen. I hope everybody can see this, right? Right. So indicators, right? So what are basically indicators? See,
indicators is nothing but using maths. Okay, maths as a trading tool. देखिए, there are what we talked about price action. तो जब भी हमने लास्ट मंथ में जो सेशंस किए थे, तो उसमें जब भी टेक्निकल एनालिसिस का इंट्रोडक्शन किया था, तभी हम ये कह रहे थे कि प्राइस एक्शन, ठीक है। तो प्राइस एक्शन में क्या करते हैं, हम ज्यादातर भाव देखते हैं, ठीक है। अभी काफी बार ऐसा होता है कि प्राइस एक्शन क्लियर नहीं होता। ओके, आइदर मार्केट बहुत ही छोटी रेंज में जाता है, या तो फिर कभी कभार समथिंग हैपेंस एंड वी आर नॉट क्लियर अबाउट द प्राइस एक्शन। तो उस टाइम पे हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं। ओके, तो इंडिकेटर्स जो टर्म है ना, ये बहुत ही बड़ा टर्म है, इन द सेंस इसमें इतनी सारी चीजें आ सकती है कि volumes have been written on this subject, right? On this word indicator. तो इंडिकेटर्स के अलग अलग प्रकार होते हैं, इंडिकेटर्स के अलग अलग उपयोगिता होती है, इंडिकेटर्स के अलग अलग एप्लीकेशन होता है। आप एंट्री के लिए यूज कर सकते हो, आप स्टॉप्स को फाइन ट्यून करने के लिए यूज कर सकते हो, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए भी इंडिकेटर्स यूज करते हो, कर सकते हो। तो हालांकि मैं ज्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए यूज नहीं करता, आई प्रेफर प्राइस एक्शन। तो ये हम इंडिकेटर्स के माध्यम से हम बेटर ट्रेडर्स बन सकते हैं। हम हमें जब भी हम मैथ्स यूज करते हैं, तो एक बहुत बड़ा फायदा होता है, इससे हम स्कैनर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन क्रिएट कॉम्प्लेक्स स्कैनर्स, वी कैन क्रिएट सिंपल स्कैनर्स, एंड इट कैन बी अ वेरी फिल्टरिंग, अ वेरी गुड फिल्टरिंग टूल आल्सो। तो आई विल आल्सो शो यू हाउ टू क्रिएट एक बेसिक सिंपल स्कैनर भी हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, एंड वी कैन क्रिएट स्ट्रैटेजीज अराउंड। तो स्ट्रैटेजीज में जब भी हम बात करते हैं, तो हम एंट्री किस भाव पे करेंगे, कौन से स्टॉक में करेंगे, जब भी एंट्री हमारी हो गई है, तो उसके बाद हम उसको मैनेज कैसे करेंगे। ऑब्वियसली रिस्क मैनेजमेंट पैरामीटर्स भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज हम कुछ रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी बात करेंगे। So this is the power of indicators. Okay, I would suggest that you start with simple forms of indicators, and please understand one thing: there is no one magic formula that is going to work for you at all times, right? ऐसा कोई इंडिकेटर बना नहीं है। इतने सारे साल हो गए इंडिकेटर्स को आए, जो आपको कोई मैजिक फॉर्मूला दे देगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी और वो सब जो चीज है, वो कांस्टेंट नहीं रहती। ओके, इंडिकेटर्स जो बेस होता है वो फिक्स पैरामीटर्स पे होते हैं ज्यादातर। तो वहां पर इंडिकेटर्स में, जैसे हम कहते हैं रीलर्निंग या मशीन लर्निंग करते हैं, वो स्टॉक मार्केट में अप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट है। हालांकि काफी लोग क्लेम करते हैं कि एआई और मशीन लर्निंग एंड एवरीथिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट स्टिल आई फील दैट इंडिकेटर्स यू कैन नॉट, बिकॉज मार्केट में सबसे बड़ी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है वोलेटिलिटी। तो जब हम वोलेटिलिटी प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट होता है, तो उसकी वजह से शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स जब भी हम लेते हैं, वो बहुत ही मुश्किल काम है। तो आई वुड सजेस्ट स्टिक विद द बेसिक्स। ओके, यू कैन डोंट लर्न maybe 20 or 30 indicators, learn two or three, और अलग अलग प्रकार के आप इंडिकेटर्स है, तो आप उसको लर्न कीजिए और उसको अपने ट्रेडिंग में उस प्रकार इस्तेमाल कीजिए। एंड प्लीज डोंट जंप। एक इंडिकेटर, अरे ये इंडिकेटर बराबर नहीं है, तो मुझे दूसरा इंडिकेटर यूज करना चाहिए। ये इंडिकेटर में, अरे वो इंडिकेटर में तो सिग्नल बहुत अच्छा आया, तो मुझे वो उसको यूज करना है। तो डोंट कीप ऑन जंपिंग विथ इंडिकेटर्स। जैसे जैसे आप फेमिलियराइज होते हो इंडिकेटर से, तो आपको उसकी जानकारी ज्यादा मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो सिग्नल लेने के लिए आपका बेटर होगा, एंड ओवरऑल इट विल हेल्प यू टू बी अ बेटर ट्रेडर, राइट। सो राइट, सो आज के टॉपिक में हम ये कवर करेंगे, व्हाट आर इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स के अलग क्लासिफिकेशंस क्या है, डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ इंडिकेटर्स, इंडिकेटर एज एन एनालिटिकल टूल हम कैसे यूज करेंगे, इंडिकेटर एज अ स्कैनिंग टूल, should you use indicators, and finally risk management and trading। तो हम रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग, ये सर्वोपरि है, राइट। रिस्क मैनेजमेंट covers everything, okay? So, you know
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी लोग इसको रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करते हैं। पोजीशन साइजिंग ठीक नहीं होती है, एंड अल्टीमेटली दैट इज व्हाट matters in trading or investment, proper risk management and so on. Okay, so let's start with this topics. And okay, so basically what are indicators? So indicators, जैसे हमने पहले कहा था, इंडिकेटर क्या है? इट्स अ मैथमेटिकल स्टडी। और वो कैलकुलेट किस पे होता है? प्राइस एंड और वॉल्यूम। मतलब प्राइस पे भी हो सकता है और वॉल्यूम पे भी हो सकता है। इंडिकेटर दूसरे इंडिकेटर पर भी बन सकता है, टू अगर आपको आपकी स्टडीज को रिफाइन करना है। सो बेसिकली इट इज अ मैथमेटिकल स्टडी दैट इज कैलकुलेटेड ऑन प्राइस एंड और वॉल्यूम। प्राइस या तो फिर वॉल्यूम पे या दोनों पे। एंड इट इज यूज टू बेसिकली एनालाइज द अंडरलाइंग प्राइस एक्शन। ओके, सो काफी सारे इंडिकेटर है। कुछ इंडिकेटर्स जो है वो प्राइस प्लॉट पे बनाए जाते हैं। तो हम जो जो प्राइस है, लेट्स से आई जस्ट अगेन गो टू द चार्ट। सो सर्टेन इंडिकेटर्स, ओके, so they can be plotted on the price chart itself, right? So ये, so for example अगर मैं बोलिंजर बैंड्स यूज करता हूँ, then they it will be plotted on the chart. Okay, uh, so Bollinger Bands default values. See, this is plotted on the chart. Okay, so right, some indicators, basically oscillators, they are plotted as a separate window. ठीक है, यहाँ पर एक सेपरेट विंडो ओपन हो गया है। तो यूजुअली एज अ रूल ऑफ थंब वी कैन से दैट ऑसिलेटर्स जो है वो नए एक चार्ट के नीचे एक अलग विंडो बनता है और उसमें प्लॉट होता है। और ओवरलेज, राइट, ओवरलेज जैसे मूविंग एवरेजेस है या तो फिर बोलिंजर बैंड्स है, तो वो इंडिकेटर्स हम प्लॉट चार्ट के ऊपर प्लॉट करते हैं। राइट, एनालिसिस कैन बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर लुकिंग एट। राइट, सो राइट, तो ये दो पॉइंट कवर हो गए। तीनों पॉइंट कवर हो गए, राइट। सो वी कैन से दैट दे आर सम इंडिकेटर्स आर जो चार्ट के ऊपर प्लॉट होते हैं उसे हम ओवरले कहते हैं, ओवरलेस, राइट। सो दैट इज व्हाट दे आर कॉल्ड। राइट, सो दिस इज हाउ द प्लॉट लुक्स। सी बेसिकली वॉल्यूम, देखो ये वॉल्यूम जो है दैट इज यूजुअली प्लॉटेड बिलो द चार्ट। वो पुरानी टेक्निक है। नया नए एनालिस्ट जो है वो दे आल्सो लाइक टू प्लॉट वॉल्यूम ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द स्केल और द लेफ्ट हैंड साइड, डिपेंडिंग। आई प्रिफर टू look at volumes as a separate window that is below the chart. Okay, so okay, now uh, ease of use indicators करना चार्ट एनालिसिस के लिए आसान हो जाता है। okay, और अच्छा, वन मोर थिंग, दैट द रीजन फॉर प्लॉटिंग इंडिकेटर्स ऑन द प्राइस चार्ट इन ए सेपरेट पेन इसलिए होता है कि कभी कभी काफी बार कुछ इंडिकेटर्स में जो प्राइस प्लॉट होता है, प्राइस प्लॉट का मतलब क्या कि अगर मैं ये इंडिकेटर को ऊपर ले जाता हूं, सी द प्राइस प्लॉट विल चेंज। ओके, सी दिस इज समथिंग वी डोंट वांट, राइट। तो इट इज बेस्ट प्लॉटेड बिकॉज इसका जो स्केल है आरएसआई का वो प्राइस से बहुत अलग होता है। तो when we talk about RSI, I'll again touch upon this point. ठीक है, so that is the reason why we plot it in a different pane. तो अगर कभी कभार आपने, अगर आप आपको ज्यादा अनुभव नहीं है इंडिकेटर के साथ और सडनली वो प्राइस के ऊपर प्लॉट हो गया, तो काफी लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं।
So indicators can help in analyzing the price action in a better way. Okay. और एक कमाल का यूज है इंडिकेटर्स का, इट इज वेरी इजी टू क्रिएट स्कैन्स. आप कंडीशंस डाल दो और जो भी आप स्टॉक लिस्ट को फॉलो करते हो, कौन से स्टॉक्स, वो लिस्ट को अ, अ, वो लिस्ट के जो कंडीशंस है जो आपने अपने स्कैन के लिए रखी है, तो आप उसे आसानी के साथ एज अ फिल्टर यूज कर सकते हो. तो आपको पूरा मार्केट देखने की जरूरत नहीं है. सिंपली लुक एट द रिजल्ट्स ऑफ द स्कैन. स्कैन में जो भी चार्ट्स आते हैं, आप उस पर ध्यान रखो और अपने ट्रेड एनालिसिस आप उस पे आसानी के साथ प्लान कर सकते हो. नाउ, राइट, सो नाउ this is end of part 1 where we just introduce the indicators. Now part 2 में हम बात करेंगे, that is indicator classification. Very very important. अलग अलग प्रकार के indicators होते हैं. आप कौन सा इंडिकेटर कौन से अंडरलाइंग मार्केट कंडीशन में यूज कर रहे हो, ये ये बहुत बड़ी मायने रखता है कि आपका इंडिकेटर कैसे काम करेगा. ओके, सो सी, फर्स्ट जब भी हमने जो टेक्निकल एनालिसिस का जो सेशन हमने यूज किया था, जो हमने जो लिया था लास्ट मंथ में, तो वहां पर हमने ये कहा था कि मार्केट्स में जो ट्रेंड होता है ना, अप डाउन और साइडवेज. ओके, तो साइडवेज मार्केट में अलग तरीके से अलग इंडिकेटर काम करेंगे. ट्रेंड फॉलोइंग, जब भी मार्केट एक ट्रेंडिंग एक्शन है तो उसमें अलग तरीके से काम करेंगे. ओके, और जो डाउन ट्रेंड है, जो डाउन ट्रेंडिंग मार्केट कंडीशन है, उसमें इंडिकेटर्स अलग तरीके से काम करेंगे. तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपका अंडरलाइन ट्रेंड क्या है. फिर आपको ये डिसाइड करना है कि करंट ट्रेंड साइडवेज है या अप ट्रेंड है या वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन है, तो इसमें क्या है. और उसके बाद जैसे प्राइस एक्शन डेवलप होती है, क्या प्राइस की ये जो जो स्थिति है, क्या वो चेंज हो रही है. लेट्स से, तो एक आई जस्ट शो यू दिस विथ एन एग्जांपल. ओके, so now I just remove everything. Now I'll just put up a chart. Okay, I'll just pull up a chart. Uh, I'll put up a chart of Hero Motors. Right. So now what you find is that after a brief trending movement, Hero Motors has now gone in a trading range. ये बहुत relatively short term time period है. तो ये, तो जब भी आप इंडिकेटर्स के सिग्नल लेते हो, तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि मैं कौन से टाइप का सिग्नल कौन से टाइप के मार्केट एनवायरनमेंट में ले रहा हूं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी आप ये समझ जाओगे कि मैं कौन सा इंडिकेटर कौन से मार्केट कंडीशन में अप्लाई कर रहा हूं, तो आपके इंडिकेटर के क्वालिटी जो है सिग्नल्स के, दैट विल इम्प्रूव वेरी मच. वो काफी इंप्रूवमेंट आ जाएगी. लेट्स से हीरो मोटर्स में है, इफ आई एम लुकिंग एट समथिंग लाइक something in a very strongly trending mode, something let's say like MCX. Okay, so MCX is in a very very strong trend. So your use of indicators, what is the type of indicator that you are using, how you are creating your scans, also depends on आप किस तरीके के प्राइस मूव ट्रेड करना चाहते हैं. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे फिर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, चाहे फिर आप नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज लेते हो, वट एवर यू आर डूइंग, यू हैव टू बी श्योर what is the underlying price action and what type of indicator you are using, या तो फिर what type of price action you want to trade. ओके, सो काफी लोग क्या करते हैं कि एक उनको कोई बता देता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई एक स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लगता है, देन
समथिंग लेट्स से किसी ने मुझे बोल दिया कि भाई मारुति बहुत अच्छा है, जरा देखो चार्ट, तो मारुति में अभी इट्स अ रेंज, मतलब इट्स नॉट अ ट्रेंड। तो इसमें मे बी एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन इधर है। ओके, इट माइट नॉट बी अ गुड price zone or good price action to buy into it. We may have to wait for some time, or we may have to wait for the prices to come down or break out depending on your holding period. Okay, so that is very very important a consideration when you use an indicator. Okay, so now let's go back to our presentation, और हम ये कहेंगे कि what is meant by trend following indicators. Okay, so trend following indicators क्या करता है? Trend following indicators are helpful in locating the current direction of the trend. Okay, okay, they are helpful in locating the current direction of the trend. Okay, it can give an advance warning. Okay, आपको एक एडवांस वार्निंग मिल सकती है कि अगर ट्रेंड की डायरेक्शन चेंज हो रही है, आपको वो भी एक वार्निंग मिल सकता है कि मे बी फ्रॉम योर द ट्रेंड इज चेंजिंग, और मे बी फ्रॉम बुलिश टू बेरिश इट इज हैपनिंग, क्या राइट? सो ट्रेड सिलेक्शन, ओके, ट्रेड सिलेक्शन कैन बी डिजाइन ऑन द करंट स्टेट ऑफ द ट्रेंड। तो आप कौन से टाइप का uh, आप कौन से टाइप का ट्रेड सिलेक्ट कर रहे हो, कौन सा अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट है। ओके, सो ओके, डिसएडवांटेज है जो ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर के, वो है दे यूजुअली लैग प्राइस एक्शन। उसका लैग प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है कि मान लो ये प्राइस एक्शन है, ठीक है, और आप एक इंडिकेटर यूज कर रहे हो, मान लीजिए आप मूविंग एवरेज जैसा इंडिकेटर यूज कर रहे हो, तो जब भी प्राइस एक्शन जो है आपको टॉप नहीं दिखाएगा, इट विल ओनली शो आफ्टर अ लैग। मतलब प्राइस की गिरावट शुरू होने के बाद आपको अंदाजा आ सकता है कि ओके, अभी ये जो ऊपर जाने की स्थिति है, अप ट्रेंड की स्थिति है, दैट कुड बी चेंजिंग। ओके, सो इफ यू आर इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक, इट कैन हेल्प यू टू टेक रेमेडियल एक्शन, या तो फिर आप वो स्टॉक को बाय करने से आप उसमें से कुछ समय के लिए उसमें से बाइंग नहीं करोगे, डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एक्शन। Okay, so these are the general guidelines why you can use trend following indicators. And trend following indicators, we can also have create some very simple scans using trend following indicators. Okay, so now uh, let's go, and the first and the most important, one of the simplest, most effective forms of a trend following indicator are moving averages. Okay, they are such a beautiful tool. I never ever look at the price chart without moving averages put on it. Okay, so now moving average, basically everybody must be knowing what an average is. Average is simple. There are different types of moving averages also. Okay, so exponential moving average होता है, simple moving average होता है, weighted average होता है, linearly weighted, uh, dual exponential moving average, triple exponential. So there are so many different types. Okay, take my word for it. Simple moving average works really well. Okay, exponential moving average में ओके, स्टैंडर्ड क्वेश्चन मुझे आता है हर बार कि सर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में और सिंपल मूविंग एवरेज में क्या फर्क है। ओके, एक्सपोनेंशियल से भी ओके, आई जस्ट प्लॉट इट ऑन द प्राइस चार्ट एंड आई विल शो। ओके, दैट इज इजियर, दोनों एवरेज को साथ में प्लॉट कर लेते हैं। लेट्स रिमूव दिस, राइट? सो फर्स्ट लेट्स प्लॉट a simple moving average, right? So we'll keep the time frame, दोनों के लिए हम सेम रखेंगे, राइट? सो आई एम जस्ट पुटिंग अप two indicators. One is a 20-day moving average, and second one is going to be a see, EMA भी मैंने 20 कर दिया है। ओके, एंड आई जस्ट चेंज द कलर, सो
we'll keep this as black, थोड़ा मोटा कर देते. And the second one is right. So now what I will, right, see, so जो red है वो simple है. Okay, we can also, I just इसको थोड़ा ग्रे कर देते हैं. So there we have right now. See, black is an exponential moving average. Okay, red is a simple moving average. तो सिंपल मूविंग एवरेज क्या करता है, वो 20 डेज है, इसके लिए लास्ट 10 दिन के क्लोजिंग प्राइस. ओके, यूजुअली moving averages, they are plotted on closing prices, but we can also do it on highs and lows also. वो भी हम कर सकते हैं. There are ways to prepare envelopes and so on and so forth. Okay, but ये discussion के लिए we'll only look at closing prices of moving averages. You can have you can plot moving average of the highs, you can plot moving average of the lows, you can create moving average channels, you can create moving average envelopes. बहुत कुछ कर सकते हैं. Anyway, ओके, सो दीज आर इक्वल वेटेड, राइट. तो जब भी हम सिंपल मूविंग एवरेज पे क्या करते हैं कि हम 20 दिन का अगर डेटा है तो हम 20 दिन के क्लोजिंग प्राइसेस ले लेंगे, उसको ऐड करेंगे, ओके, और 20 से डिवाइड करेंगे, तो हमें एक वैल्यू मिलेगा एंड दैट वैल्यू इज प्लॉटेड बिलो द चार्ट, राइट. तो दिस बिकम्स अ सिंपल मूविंग एवरेज. तो सिंपल मूविंग एवरेज में क्या होता है कि हम लास्ट 20 दिन के प्राइस है, हम उस पे सब पे इक्वल वेट, मतलब सामान्य वजन दे रहे हैं. वी आर गिविंग इक्वल वेटेज. तो हम ये, तो सिंपल मूविंग एवरेज ये कहता है कि भैया प्राइस कौन सा भी हो, सबको, किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा. ठीक है. एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या करता है कि उसका एक स्पेशल फॉर्मूला है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो फ्रंट वेटेड होता है. सो व्हाट इज द फ्रंट वेटेड? फ्रंट वेटेड मूविंग एवरेज में जो रीसेंट डेटा है, रीसेंट जो नया डेटा है, उसको ज्यादा, उसको उस पे वजन मिलता है. ओके, सो नाउ, ओके, सो दैट इज एसेंशियली द डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल मूविंग एवरेज एंड एन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. ओके, एट टाइम्स, ओके, योर रेड जो है, द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, देखो ये, सॉरी, ब्लैक जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. ओके, सो यूजुअली इट इज स्लाइटली फास्टर. ओके, थोड़ा फास्ट रहता है एज कंपेयर्ड टू द प्राइस. ओके, बट यूजुअली ज्यादा फर्क नहीं आता. दोनों 20 होना चाहिए था. हाँ हाँ, अभी देखो, अभी समानता आ गई. मुझे लगा कुछ प्राइसेस का कैलकुलेशन में गड़बड़ है. ओके, नाउ वी आर सेटल. वो देखो, दोनों का 20 दिन का है ना. सी, दिस इज 20, ये लेंथ है ना, इसका 20 है, बराबर. एंड इसका लेंथ वो भी 20 है, तो दोनों सामान्य है, राइट. तो टाइम पीरियड इज द सेम. ओके, नाउ ऑब्जर्व, अभी है ना, लेट्स जूम इन एंड आई जस्ट शो यू. ओके, नाउ सी, change in direction of the moving average. Okay, there are different signals we can take. Okay, तो exponential moving average faster क्यों है? See, look at this, दोनों सेम है. यहां से प्राइस में एक गिरावट आई, देखो ऊपर से नीचे आया, राइट. नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग हियर. ओके, यहां पर देखो, एक्स जो रेड है ना, ये जो जो रेड और ब्लैक साथ में है. नाउ सी व्हाट हैपन. अभी ये देखो, यहां पर ब्लैक लाइन जो है ना, उसकी डायरेक्शन चेंज, देखो ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, और ये डायरेक्शन चेंज जो है वो सिंपल मूविंग एवरेज से ज्यादा तेज होती है. इट इज फास्टर. कैन यू सी दिस? ये आप देख सकते हो. सी, आई अगेन, आई जस्ट शो दिस अगेन, रिपीट. सी, यहां पर prices have started to come down. See, change in direction. I just change the color.
See the change in direction of the moving average. It is moving down. See this black line, उसमें जो टर्न आया ना वो पहले आया. Okay, so slightly faster signal. Okay, can you see this? Can you see this, everyone? आप देख सकते हो ध्यान से. Okay. Can you see this? Right. See, you देखो अभी आपका घर पे चार्ट होगा ना, तो आप इसको है ना दोनों को प्रैक्टिस करो. आज आज शाम को जाओ, ये सेशन खत्म होने के बाद है, आप कोई भी चार्टिंग पैकेज ले लो और ये दो मूविंग एवरेज प्लॉट करके देखो. ध्यान रखना लेकिन टाइम फ्रेम सेम हो. ओके, सो दिस गिव्स यू अ फास्टर चेंज इन इवन हियर. यहाँ पर देयर वाज दिस चेंज इन डायरेक्शन हियर. ओके, ये चेंज इन डायरेक्शन केम समवेयर अराउंड हियर. सी यू नीड टू डेवलप एन आई फॉर दिस. ओके, so that is what we call as the change in direction. Moving average ka change in slope can also be taken as an entry and exit signal. Okay, thoda advanced concept hai. Okay, so right, so basic difference exponential or moving isme samajh mein aa gaya. You can also apply a linearly weighted moving average, but again uh, it will give you same output. कभी यूज नहीं करता हूँ एनीवेज. so ये वो वेटेड भी कहते हैं, वे मूविंग एवरेज वेटेड. See, we can also, तो इसमें weights आते हैं. We can also plot this. Ultimately, basically, it is the same thing. Okay. एक तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये एक, मैं ये नहीं कहूंगा कि फायदा है, एक कैरेक्टरिस्टिक है. एक कैरेक्टर, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बिकॉज वो फ्रंट वेटेड डेटा है, इसीलिए उसमें चेंज इन डायरेक्शन आपकी जल्दी होती है और एक्सपोनेंशियल में थोड़ी आहिस्ता होती है. चाय पी लेता हूँ, एक आप पानी है, जैसे सम वाटर. नाउ basic moving, now I'll just remove this exponential moving average. I'll just bring back candles. There we have it. Right now let's go back to the presentation. वहां पे हम फिर जाते हैं. Okay, now look at this. अभी ये एक लाइन पढ़ो यहां पर. ओके, प्राइस क्रॉसिंग अबाउ अ मूविंग एवरेज फ्रॉम बिलो. मतलब मान लो अगर ये प्राइस है और ये मूविंग एवरेज. मान लो ये मूविंग एवरेज है. प्राइस क्रॉसिंग मूविंग एवरेज फ्रॉम बिलो, दिस इज इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि प्राइस वांट्स टू गो अप. ओके, सो उसका मतलब क्या होता है? प्राइस वांट्स टू गो अप. प्राइस वांट्स टू गो अप मतलब अगर भाव ऊपर जा रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए? व्हाट शुड आई डू? ओके, व्हाट शुड आई डू? इफ द प्राइस वांट्स टू गो अप, आई शुड बी बाइंग. बराबर ना? मुझे बाइंग करना चाहिए. ओके, भाव कहां तक जाएगा वो मूविंग एवरेज नहीं बताएगा. मूविंग एवरेज सिर्फ ये बताएगा कि भाव ऊपर जाने वाला है, और जब तक भाव ये मूविंग एवरेज के ऊपर है
तब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाव ऊपर जाएगा. ओके. सम देन इन फ्यूचर व्हाट हैपेंस, प्राइस, something will happen and this price will start to come down. तो अगर भाव नीचे क्रॉस ओवर आया, उसका मतलब क्या कि प्राइस अभी नीचे जाने वाला है. नीचे कितना जाएगा वो मूविंग एवरेज नहीं बताएगा, वो आपको एनालिसिस करके एक अनुमान लगाना पड़ेगा कि प्राइस कहां तक जा सकता है. ओके. सो दिस इज कॉल्ड एज अ सिंगल मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर सिग्नल. सिंगल मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर सिग्नल इसको कहते हैं. ओके. राइट. प्राइस क्रॉसिंग below a moving average. Okay. Price crossing below a moving average from above means price wants to go down. जो मैंने कहा था कि अभी भाव मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है, तो उसका मतलब प्राइस को नीचे जाना है. ओके. राइट. तो ये दो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए. लेट्स लुक एट दिस ऑन द प्राइस चार्ट. अभी मारुति में क्या हुआ? सी बेसिकली व्हाट हैज हैपेंड इन मारुति. मारुति में सी हियर, सी प्राइस क्रॉस अबाउट द मूविंग एवरेज. व्हाट हैपेंड? प्राइस देन क्या हुआ? इट wants टू गो अप. ओके. तो अनुमान लगा सकता हूं यहां पर 13057 तक जा सकता है. मेजर रेजिस्टेंस है, तो है जगह है. अगर आपको ट्रेड लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो. ओके. इट्स नॉट गारंटीड. लेकिन सी दीज आर नॉट कंफर्म सिग्नल्स, नहीं होता है. दीज आर प्रोबेबिलिटीज. तो मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था ना कि प्रोबेबिलिटीज मतलब क्या, कि आप अगर 30 ट्रेड्स लेते हैं, ओके, 30 ट्रेड्स ऑफ सिमिलर सिग्नल, तो अगर आपने चलो सिर्फ मारुति में सिर्फ बाय सिग्नल दिए हैं, राइट. सो आई विल से दैट लेट्स से दिस इज ओके. सो एवरी टाइम प्राइस वांट्स टू गो अबाउ, wants to go above the moving average, okay, I will buy. Okay. Now where do I keep my stop? I will keep my stop below the turning point. Okay. Now so my stop will be here. I am buying here. Okay. Price goes up. Now how do I exit? That I don't know. भाव ऊपर जा रहा है वो मुझे मालूम. So one way I could do it is I can have a pre-planned target. That is one way of exiting. देखिए exit पे है ना, कोई बात ही नहीं करता है. सब लोग एंट्री एंट्री किधर लेने का बोलो, एग्जिट वो मैं देख लेगा. ओके. जिस दिन आप अपने ट्रेडिंग में एग्जिट मास्टर करोगे ना, मास्टरी में आ जाएगी ना आपको, उस दिन आप नंबर 1 ट्रेडर बन जाओगे. राइट. लोगों का प्रॉब्लम होता है एग्जिट्स में. एंट्री तो अरे ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये न्यूज़पेपर में ये टिप है, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, वो मिल जाएगा, एंट्री मिल जाएगा. लेकिन एग्जिट का क्या है? एग्जिट नोबडी नोस. वो तो राम भरोसे. बराबर की नहीं? यस और नो? राइट. एग्जिट. राइट. राइट. सो नाउ आई एम taking this as a buy sell. Okay, so this price goes up here, I will make some money here. Price goes below a moving average, this is a sell. I will take a sell signal here. Now see what happens. Price goes above the moving average and then it comes down. So if I am buying here, okay, I am losing money on this trade. See, I am buying here, this comes down, now you are confused. अरे मैंने मूविंग एवरेज पे लिया था, तो ये सिग्नल में तो बहुत सॉलिड गया था भाव ऊपर, ये सिग्नल लिया तो अभी प्राइस में फंस गया. ओके. तो अगर 2 या 3 मूविंग एवरेज के सिग्नल फेल होते हैं तो आप कहोगे अरे यार ये मूविंग एवरेज यूज नहीं करता. ओके. बट some part of losing trades is important. Sometimes what happens is that because price tends to go in a range,
आपको बहुत सारे मूविंग एवरेज के सिग्नल मिलेंगे, ओके, विच एक्चुअली कैन कैन बी अ बैरियर। ये आपके ट्रेडिंग के लिए एक 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 अवरोध पैदा कर सकता है। व्हाई? बिकॉज समटाइम्स यू आर जस्ट टेकिंग टू मेनी सिग्नल्स, okay. It doesn't mean that the moving average does not work. Sometimes, right, sometimes the signals will fail because if देखो moving average क्या है, it's a trend following tool, okay. When there is no trend, when there is no trend, okay, moving averages में you will get many signals, or at times this signals में fail, या तो फिर छोटा प्रॉफिट आएगा आपको एंड प्राइसेस विल कम डाउन। तो उसका मतलब क्या है कि आपको ट्रेड मैनेज करने को आना चाहिए। ट्रेड मैनेजमेंट में मतलब क्या करोगे? तो ट्रेड मैनेजमेंट में क्या करोगे, तो आपको कुछ प्रॉफिट है वो जल्दी लेने पड़ेंगे, ठीक है, कुछ हद तक प्रॉफिट आपको जल्दी लेना पड़ेगा, और कोई प्रॉफिट को टू सम एक्सटेंट यू मे हैव टू लर्न हाउ टू ट्रेल स्टॉप्स, ओके। तो वो भी हम कर सकते हैं। इवन दैट इज व्हाट वी कैन डू। वी कैन आल्सो सेट टारगेट based on moving averages, and that can be done also in a mathematical way, okay, right? So moving average advantages and disadvantages। एडवांटेज क्या है इसका? नाउ व्हाट आई कैन डू, मैंने आपको कहा था ना स्कैनर, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन सिंपली क्रिएट अ सिंपल स्कैनर जो मुझे बताएगा कि आज, लेट्स से आई वांट टू फाइंड आउट which stocks have crossed above the moving average today. You can do it on 5 minutes, you can do it on, let's say, okay, so I'll just create a very short term, uh, okay, एक 2 मिनट का काम है। आई विल 20 day क्रॉस, ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट दिस। मैंने क्या किया, ये क्रिएट किया, ये प्लस का बटन दबा दिया, ओके, उसमें एक लिख दिया प्राइस। नाउ आई एम जस्ट क्रॉसेज अप, या सिंपल मूविंग एवरेज, ओके, 20 अप्लाई, ओके। सो आई विल गेट अ लॉट ऑफ सिग्नल्स। सो लेट्स से अभी ये बोल रहा है एनटीपीसी, विल जस्ट टेक अ कपल ऑफ सिग्नल्स। एनटीपीसी बीएसई में मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर सिग्नल है, तो हम लोग बहुत सारे हैं, बट विल ओनली लुक एट दीस, ठीक है। तो ओके, विल ओनली लुक एट एनटीपीसी एंड दूसरा कौन सा है, बीएसई, ठीक है। सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट पुटिंग दिस एनटीपीसी, okay. Now see, this is this signal worth taking? What is the what is the flow of the trend? See, basically I still think that this is a basing pattern. I will not take this trade. देखो स्कैनर ने तो बोल दिया मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर आ गया, ओके। यू कैन ऑल्सो हैव सम एडिशनल फिल्टर्स। आई जस्ट गिव यू वन मोर फिल्टर, यू कैन दैट यू कैन यूज, ओके, राइट। सो एक एनटीपीसी है, कैन इट गो अप, मे बी यस, ओके। अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हो, यू कैन लुक एट एनटीपीसी एंड keep this as a target, okay. It's a very short term target, right? So maybe अगर मुझे 2 3 4 दिन के लिए ये ट्रेड ठीक है, लेकिन अगर मुझे 1 महीने के लिए ट्रेड चाहिए ना, तो ये सिग्नल ठीक नहीं है। व्हाई? बिकॉज प्राइसेस विल गो डाउन, गो अप, इधर हिट होगा, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आएगा, नहीं आएगा, आई डोंट नो हाउ व्हाट विल हैपन, ओके। लेट्स लुक एट अनदर वन, बीएसई। नाउ बीएसई इज गुड, okay. See, BSE crossover, what is the overall trend structure? See, दोनों में, right? So
20-day moving average is an intermediate signal. ठीक है, 20-day, 50-day. You can also do a 50-day moving average crossover also. So now looking at price action, अभी आप मुझे ये बताओ कि बीएससी का बेटर ट्रेड है या एनटीपीसी का. ठीक है, मैंने आपको दोनों चार्ट दिखा दिए, चाहे तो आप दोनों चार्ट देख लो सामने. नाउ यू टेल मी, ओके, इज एनटीपीसी अ बेटर सिग्नल और बीएससी इज अ बेटर सिग्नल? चलो नाउ यू टेल मी. अभी मैं अलाइन नहीं कर रहा हूं चार्ट को, आप देख लो. नाउ आप देख लो एंड प्लीज सेंड योर कमेंट्स ऑन द चैट बॉक्स. ओके. अरे भाई, इतने कम आंसर, इतने 1 2 3 4 5. जागो. नॉट इवन 2% ऑफ पीपल आर आंसरिंग. हाँ, आ गया. हाँ, बीएससी बीएससी बीएससी, देखो समझ में आ गया ना. एनटीपीसी, पूजा शर्मा, ग्रेट. पूजा शर्मा थिंक्स एनटीपीसी. ओके पूजा जी, you maybe you have a point, because if you are somebody who is a value investor, okay, this could be a good point. Okay, but if you are a momentum player, अगर आपको 4 5 6 दिन 8 दिन में अगर चाहिए, then BSC could be a better bet. So it depends. It depends on what type of a player you are. Okay, NTPC very low volatility, not likely that the prices will come down. BSC the prices have gone. See, देखो risk तो सब में है, but it also depends on how much you want to hold it. Okay, so there is nothing right or wrong about this. From my perspective, I would say BSC is a better signal if I am looking at a relatively sharp move over, let's say, next 5 to 10 trading sessions. NTPC can go up, but I will monitor this carefully. Okay, right? So now, what I can do is one more thing. So now, अभी देखो, अगर मैं ट्रेंड की डायरेक्शन में सिग्नल लूं तो will it make a difference? Okay, so now what I will do, I will use another moving average. Okay, और वो कौन सा? See, so I will use another moving average. I will use a 200-day moving average. Okay, so moving average simple. Okay, I'll just delete this. I will delete this. I will change this to a 200-day. Okay, I will change this to a 200-day. We'll give it a good color. Okay, we'll give it a black color. See, now see what happens. Okay, 200-day is a long-term moving average. Okay, right? 200-day is a long-term moving average. Now I can do a couple of things. See, अगर मैं एनटीपीसी में I am only taking both types of trade. Okay, अगर 20 दिन के नीचे गया तो सेल, 20 दिन के ऊपर गया तो बाय. Now what I can do, I can create a filter. अगर प्राइस 200-day के मूविंग एवरेज के नीचे है, okay, it is below the moving average. Okay, so I will not take buy signals. I will only take sell signals. See, this is a sell, price breaks below a moving average. This is another sell. This is another sell. Now I am not taking this buy signal. मैं ये buy signal नहीं ले रहा हूँ. I am not taking this buy signal. Why? Because my trading plan tells me that I will only take buy signals if the price and the moving, if the price is above the 200-day moving average and 20-day moving average is also above the 200-day. Okay, so basically, what am I saying? Okay, I am only saying कि अगर 20 दिन का मूविंग एवरेज 200 के ऊपर है तो ही मैं बाय लूंगा, नहीं तो मैं आई विल अवॉइड टेकिंग बाय सिग्नल्स. व्हाई? बिकॉज इफ द जनरल ट्रेंड इज डाउन, आई एम ओनली बाइंग शॉर्ट टर्म करेक्शन. सी देखो, ये ऊपर आया बाय, ये फेल हो गया, नीचे आया मे बी थोड़ा मार्केट में वोलेटिलिटी कम है,
I will not take this. See, now the volatility is contracting. So we also need to know about what volatility indicators are. Okay? Now, right? So now if I apply this same model to, let's say, BSE, okay. Now if I am applying this same model to BSE, I see 20-day moving average is above uh, the 200. So maybe this can be a good buying opportunity. So I can buy here. Okay. This stop loss is very close to the market. ये बहुत नजदीक है. I might get stopped out. 3-4 दिन का नैरो मूवमेंट है. कल अगर बाजार ऊपर नहीं खुला कुछ होता है, I may not. I may keep my stop loss here. Okay. Now, okay. So now I also need to have an exit plan. तो exit plan में मैं क्या कर सकता हूँ? I can only simply look at the chart and I can give this as a possible target. Okay. The previous swing high can be the target. See, price crosses above the moving average. Okay. You can simply देखो जहां से प्राइस ने पहले टर्न लिया था ना, ये टर्न. ओके. ये जो टर्निंग पॉइंट है ना, ये जो टर्निंग पॉइंट, ये दिस टर्निंग पॉइंट. तो आई कैन पुट दिस एज द टारगेट. द प्रीवियस, इसको कहते हैं टारगेटिंग द प्रायर स्विंग हाई. तो ये टारगेट मेरा हो सकता है. ठीक है. तो ये एक टारगेट हो सकता है. नाउ व्हाट एल्स कैन आई डू? चलो मान लिए मैंने टारगेट पे एग्जिट किया है, नहीं किया है टारगेट पे. नाउ व्हाट एल्स कैन आई डू? व्हाट इफ आई वांट टू रन ऑन अ मूविंग. देखो, सी, प्राइस अबाउ अ 200-day मूविंग एवरेज, अगर मैं ये टारगेट डालता हूं, देखो, और भाव भाग गया तो मैं क्या करूंगा? देखो ऐसा भी हो सकता है ना. सो इट डिपेंड्स ऑन योर एंट्री, ऑन योर एग्जिट. इट डिपेंड्स ऑन योर ट्रेडिंग प्लान. ये आपको ट्रेडिंग प्लान में लिखना पड़ेगा. आपको लिखा पट्टी करनी पड़ेगी कि मुझे एग्जिट कैसे करना है. और ये जो ट्रेडिंग प्लान है ना, दैट इज गोइंग टू बी यूनिक टू यू. ओके. सो नाउ व्हाट एल्स कैन आई डू? आई कैन पुट, आई कैन डू अ कपल ऑफ थिंग्स. ओके. I can have something we all know, and uh, okay, we can have uh, a trading indicator, right? Something that super trend. A super trend is just now. I can have something called as a super trend. Okay, super trend सबने सुना होगा ना. तो I'll just hide this. अब ये super trend भैया को आने दो. राइट. सुपर ट्रेंड, देखो सुपर ट्रेंड में डिफॉल्ट वैल्यूज क्या है? इट इज 1033. ओके. तो नाउ सी व्हाट हैपेंस. चलो अभी ये हम लोग है ना, ये मूविंग एवरेज को छुपा देते हैं. सो नाउ इफ आई एम बाइंग हियर ऑन अ मूविंग एवरेज, सी नाउ व्हाट हैपेंस. एज प्राइस, ओके, लेट्स गो टू दिस एग्जांपल. मान लो, ओके, तो मान लो यहां से मूविंग एवरेज ऊपर आए. राइट. सो आई हैव अ, ये मालूम, ये बाय सिग्नल था इधर. इफ यू रिमेंबर, सी दिस बाय. ओके. दिस इज माय बाय. ओके. दिस इज द बाय सिग्नल. ओके. दिस इज माय इनिशियल टारगेट. मुझे लगता है यहां तक प्राइस आना चाहिए. ओके. तो अगर यहां पर प्राइस आता है तो मुझे, मैं ट्रेल कैसे करूंगा? देखो ये सुपर ट्रेंड है. राइट. तो सुपर ट्रेंड के पैरामीटर्स क्या है? 10 और 3. आई एम नॉट गोइंग इनटू द मैथ्स बिहाइंड सुपर ट्रेंड, बट आई कैन डू समथिंग इंस्टेड ऑफ दिस फैक्टर. देखो अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरीके से फैक्टर्स डिफाइन होते हैं. तो आप थोड़ा उसमें रिसर्च करो. आई एम यूजिंग ट्रेडिंग व्यू. सो आई कैन डू समथिंग. आई कैन जस्ट चेंज दिस टू 1.5. नाउ सी व्हाट हैपेंस. देखो मैंने इसको 1.5 कर दूंगा. ओके. सी नाउ व्हाट हैपेंस.
नहीं तो चलो एक अलग ही दूसरा ही कर देंगे। चलो ये आपका सुपर ट्रेंड है। चलो दूसरा एक सुपर ट्रेंड प्लॉट कर देते हैं। चलो SUPER, ये सुपर ट्रेंड। तो ये सुपर ट्रेंड का है ना, हम लोग पैरामीटर चेंज करके इसको 1.5 करते हैं। कलर भी चेंज करना पड़ेगा ना, तो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, चलो दोनों को ब्लू कर देते हैं। सी यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। ओके, ये ब्लू नहीं, वी विल हैव, चलो ब्लैक कर देते हैं। तो ब्लैक कर देंगे, और वी कैन डू, ओके, वी कैन डू सर्कल्स। हाँ, अब ये समझ में आ गई। सी नाउ यू सी व्हाट इज हैपनिंग। सी आई जस्ट जूम दिस। सी बाय हियर, अगर मैं डिफॉल्ट वैल्यू लेता हूं ना, तो माय एग्जिट विल बी हियर। ये देखो, ये ब्लू लाइन है ना, ये, सॉरी, ओके, सी आई एम एग्जिटिंग हियर, एंड या ये दोनों, ओके, सी दिस इज एन एंट्री। ओके, आई एम नाउ मूविंग माई स्टॉप हियर। नहीं तो सुपर ट्रेंड का वैल्यू कभी आता था यहाँ पे, इट वुड हैव बीन समवेयर हियर। ओके, तो यहां पर आता, सो नाउ व्हाट हैव आई डन, जैसे ही मेरा इनिशियल टारगेट आता है, मैंने स्टॉप लॉस ऊपर कर दिया। वो कैसे किया मैंने, आई स्टार्टेड टू यूज अ सुपर ट्रेंड, लेकिन उसको मैंने फास्ट कर दिया। ओके, मैं 1.5 नहीं रखता हूं। देखो, अगर आप चाहो तो आप 1 भी कर सकते हो, कि भाई झटपट अपना भाव आ गया, बाकी में तो एग्जिट मार लो। ओके, सब चीज का यू हैव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, राइट। किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, एवरीबडी डज नॉट गेट एवरीथिंग। ठीक है, सो यू हैव टू डिफाइन व्हाट योर एंट्री इज, व्हाट यू हैव टू डिफाइन व्हाट योर एग्जिट्स आर, एंड दैट इज हाउ यू create a very very simple trading plan using moving averages. Okay, what I have given you is uh, a workable system. Okay, I am not guaranteeing you कि आपको इसमें होगा कहीं, but it will take you more towards discipline trading. Okay, just don't you know just don't open a scanner और ये भी आया, और अगर आप पूरा मार्केट का स्कैनर लगोगे ना, तो आपको ये टाइम, देखो ये हमारा, इसको इतने सारे स्टॉक्स आप एनालाइज ही नहीं कर सकते। इतना 60, आई थिंक टोटल 60। Okay, so you need to have some filters. What you can also do is that you can only look at, let's say, something like maybe, okay, you can only look at Nifty 100. चलो 100 स्टॉक्स में कौन सा आया है, तो मैं इसी में 200, यू ओनली हैव 3। ओके, देखो एक सिग्नल एनटीपीसी सिप्ला, वो बीएससी शायद इसमें नहीं होगा, इसलिए ये इंडेक्स में है, राइट। तो इसमें आया है मदरसन। तो लेट्स सी, लेट्स टॉक अबाउट मदरसन। देखो मदरसन क्या बोलता है। okay, देखो ये मदरसन आ गया। ओके, ये मदरसन, संवर्धना मदरसन। ओके, सी नाउ यू कैन सिंपली, ये 200 है, ये, ओके, सी दिस में नॉट बी अ ग्रेट सिग्नल। व्हाई, price is just taking resistance at a 200-day moving average. Maybe I'll just wait, look at some other stock. See, this is very very unclear whether the trend wants to go up, trend wants to go. देखो, we don't, so just forget it. You don't have to take each and every signal that comes your way. Okay. You see, moving averages sometimes can act as support and resistance also. Okay. But I don't use it as a support and resistance number, क्योंकि अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग वोलेटिलिटी है। बहुत सारे स्टॉक्स में मूविंग एवरेज, 20-day मूविंग एवरेज एंड 50-day मूविंग एवरेज विल वर्क फाइन। यू कैन ऑल्सो यूज अ 200-day मूविंग एवरेज। देखो एग्जैक्ट ऑलमोस्ट बैंक 200 दिन के मूविंग एवरेज को टच करके प्राइस नीचे आया ओवर ईयर। ओके, यहाँ पर मूविंग एवरेज, इट जस्ट हेल्ड ऑन द सपोर्ट, एंड फाइनली इट ब्रोक डाउन। ओके,
So 200-day moving average also acts as a major barrier at times, but it is not exact. It is not as precise as price action. Okay. So, right. So this is how we use a moving average. We can use super trend as a trend follow, as a trailing stop ka tool. Okay. So you can use it in these. This is only one very practical way of using it. Relatively easy. Okay. Now, when we talk about risk management, okay. अच्छा चलो, okay. अरे इधर तक किसी को कोई सवाल? आई एम जस्ट मूविंग एवरेज पे मैंने राइट, तो मूविंग एवरेज का जो डिस्कशन हुआ है, मूविंग एवरेज जो ट्रेलिंग स्टॉप टारगेट सेटिंग का जो हमने डिस्कशन किया, उस पे किसी को कोई सवाल है बिफोर वी मूव ऑन? एनी क्वेश्चन एनीवन? किसी को कोई सवाल है मूविंग एवरेज तक, जब तक हमने ये डिस्कस किया है? प्लीज रिवाइज वंस, वीतू राज बर्मन जी। ओ माय गुडनेस। चलो, व्हाट एल्स? प्लीज रिपीट इफ पॉसिबल, प्लीज रिवाइज वंस। देखो, इट इज ओके, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। परफेक्ट अभिषेक श्रीवास्तव जी। चलो, राइट, देखो, सी व्हाट वी आर यूजिंग, देखो अभी शांति रखो, नाउ आई जस्ट गो थ्रू इट इन नो, ओके, बिकॉज वी हैव अदर स्टफ टू कवर आल्सो। ओके, सी व्हाट वी आर यूजिंग इज अ मूविंग एवरेज जो टूल है। ओके, इट्स अ वेरी बेसिक सिग्नल। लेट्स गो टू द पीपी। See, let's stick to only this part. Okay, I hope I'm sharing my PPT, right? See, price crossing above a moving average from below is considered as price wants to go up. It is bullish. Okay, उसको कहते हैं bullish crossover signal. So what does this mean? अगर ये प्राइस है, ओके, और ये मूविंग एवरेज, लेट्स से once price crosses above the moving average, okay, it means price wants to go up. Okay, right? So now what I am doing, I am considering this as a buy signal. Okay, ये buy signal consider करता हूं, और मैं जो टर्निंग पॉइंट है उसके यहां पर स्टॉप लॉस डाल देता हूं। ठीक है, जो हमने बीएससी में देखा था ना, जो 4-5 दिन पहले का जो प्राइस है, मैंने क्या कहा था कि 2-3 दिन का प्राइस बहुत नजीक है, तो उसमें स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस है। ओके, नाउ ओके, राइट, सो दैट इज वेयर द स्टॉप लॉस इज। नाउ फॉर अ टारगेट वी कैन यूज द प्रीवियस हाई एज द स्टॉप। ठीक है, तो ये अगर प्राइस है और यहां पर क्रॉस ओवर आया है, आई एम यूजिंग दिस एज द टारगेट। ओके, सो इफ द प्राइस hits the target, I may exit my entire position. Okay, I may exit my entire position. Depends on my exit strategy. ठीक है, और what I will do, I can use something else as a trailing stop mechanism. Okay, so this is what we call as the super trend. तो जब भी आपका टारगेट 1 हिट होता है, you can use as a trailing stop. Okay, so you can use this as a trailing stop. Okay, तो प्राइस गोज अप। तो ट्रेलिंग स्टॉप कभी लगाओगे? जब भी आपका टारगेट, फर्स्ट टारगेट जो हिट हो जाता है उसके बाद लगाओ। देखो, आपको, आप अनुमान भी लगा सकते हो, आप ये भी कह सकते हो कि अरे मेरे एंट्री प्राइस से अगर 5% प्राइस ऊपर जाता है या 4% आ जाता है, तो आई विल
बुक पार्शियल प्रॉफिट्स, तो मैं 10% तक वेट नहीं करूंगा। ओके, कोई अगर ये करेगा कि 5% में क्या कमाने का, मुझे तो कम से कम 10% चाहिए। तो दैट डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल। ओके, तो आप चार्ट कैसे एनालाइज करते हो, आपका एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या है, दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू डिफाइन, और ये रहेगा आपके ट्रेडिंग प्लान में। ओके, राइट। तो ये हो गया आपका एग्जिट। नाउ एज अ फिल्टर मैंने क्या कहा कि अगर ये येलो हमारा जो मूविंग एवरेज है, आई जस्ट रिमूव समथिंग, I don't need this. I don't need this. I just remove this also. Now, what I have also told you, कि as a filter, okay, what you can do, you can use a longer term 200-day moving average, right? I can use a longer term 200-day moving average, कि अगर 20-day moving average जो है 20 डे, वो 20 के ऊपर है, ओके, देन आई वॉन्ट टू ओनली टेक बाय सिग्नल्स। मुझे एक फिल्टर है, इट इज अ फिल्टर, ओके, इट कैन वर्क बेटर। तो बीएससी में मैंने क्या कहा कि बिकॉज 20-डे मूविंग एवरेज है जो 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर है, इट इज अ स्लाइटली हायर प्रोबेबिलिटी। ओके, एनटीपीसी में क्या था, 20 दिन का मूविंग एवरेज 200 के नीचे था, तो इसलिए हमने कहा कि मे बी इट इज नॉट अ गुड मोमेंटम ट्रेड। ओके, सी, देखो ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है कि बीएससी में कुछ हो, कुछ एनटीपीसी में कुछ न्यूज आ जाए, अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट आ जाए, एंड एनटीपीसी कैन शूट अप। ओके, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, दैट इज समथिंग दैट वी कैनॉट डिसाइड इन एडवांस। ओके, नया इंफॉर्मेशन हमेशा आता है, और उसकी वजह से जो आपको, जो अनुमान, जो हम अनुमान लगाते हैं ना, वो एग्जिस्टिंग हमारे आंख के सामने क्या है, हम उस पर अनुमान लगाते हैं। अगर 4 दिन के बाद एनटीपीसी में कुछ अचानक से न्यूज आ जाता है जिसका हमें अंदर जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं है, ओके, तो उसमें वी कैनॉट डू एनीथिंग, बट दैट डजंट मीन दैट द मूविंग एवरेज सिस्टम इज नॉट वर्किंग। ओके, इट जस्ट मीन्स कि अगर आपने एनटीपीसी लिया है और उसमें कुछ न्यूज आ जाता है, प्राइसेस कैन गो अगेंस्ट यू, यू कैन गेट नॉक्ड आउट ऑफ अ ट्रेड, दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ट्रेडिंग प्रोसेस। Okay, so that is something that you have to understand, you have to accept it, कि अगर आपके पास 10 स्टॉक है, 10 स्टॉक में से कभी ना कभी किसी ना किसी स्टॉक में कुछ न्यूज आ जाता है। फॉर एग्जांपल अभी जो सिगाची में जो फायर का जो हुआ, तो दैट वाज नॉट समथिंग एनीबडी कुड हैव एंटिसिपेटेड, राइट, नोबडी कुड हैव एंटिसिपेटेड नाउ इजराइल अटैकिंग ईरान, होगा होगा होगा, कभी होगा, कुछ नहीं जानते, तो यू नो दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ right, so that is a part and parcel uh, of the trading process, right? So okay, so I have देखो संक्षेप में मैंने फिर से समझाने की कोशिश की है। आई होप, ओके, इट कैन बी, सी, आई डोंट सी ट्रेडिंग ऐप में क्या अवेलेबल नहीं है, दैट इज नॉट माई, that is not my area, so please get in touch with the relevant person. Okay, as can ऐसे be useful for intraday trades or only for long term trades? SMAs can also be used for intraday trades, but you need to be very fast at your movement. How you do it, as intraday trading is an entirely different ball game. आपका टाइम कितना है आपके पास, and so on and so forth. ठीक है, so it can be used for intraday trades also. The entire the process remains the same, but moving average value, see, this is not an exhaustive discussion on moving averages, we have barely touched the surface, मतलब we have not even scratched, I कहते हैं ना कि ऊपर का कुछ आइसबर्ग के टॉप का अभी तक छुआ भी नहीं, so it's a huge topic by itself.
Okay. Now coming to moving averages, and because we have talked about entry signals, let's talk something on risk management, which is so very important. Okay. So risk management में क्या होता है? See, basically, first and foremost thing, what you let's say, let's look at BSc का exam. Now, if my so first thing आपको क्या करना चाहिए कि आपका first step towards a, a trading plan is understanding. First thing आपको आपका कैपिटल कितना है, कैपिटल मतलब आपका रिस्क फ्री कैपिटल कितना है वो आप ध्यान रखो. ओके. नेवर एवर मिक्स योर सेविंग्स अकाउंट, सैलरी अकाउंट विथ योर ट्रेडिंग कैपिटल. ओके. आपका जब भी आपका एसआईपी खत्म हो जाता है, आपका जो भी डे टू डे डिस्क्रिशनरी नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस खत्म हो जाता है, उसके बाद आप ट्रेडिंग में कितना पैसा लगाते हो, दैट इज व्हाट योर कैपिटल इज, राइट. तो लेट्स से आई हैव माय कैपिटल इज लेट्स से व्हाटएवर जो भी है, लेट्स से 5 लाख, 1 लाख, 50,000 भी हो सकता है, जो भी है. ओके. द बेसिक रूल इज दैट डोंट. ओके. तो बेसिकली देयर इज द रूल इज डोंट लूज मोर देन 1%. ओके. डोंट यूज मोर देन 1% ऑफ योर कैपिटल. तो 5 लाख का कैपिटल है, तो 5,000 से ज्यादा. ओके. मुझे एक भी ट्रेड में नहीं जाना चाहिए. सो आई शुड नॉट लूज मोर देन 5,000 ऑन वन ट्रेड. ओके. तो इफ आई एम लेट्स से, अगर बीएसई, इफ आई एम बाइंग एट लेट्स से 2820, तो मैं बीएसई आई एम बाइंग एट 2820, so let's say 2820. Okay. So my my maximum loss I'm willing to take is let's say 5,000. Okay. तो अगर 5,000 का लॉस है तो मेरा. Okay. Now 2820 is the entry. Okay. My stop loss is at 2570. चलो, तो मान लीजिए मेरा स्टॉप लॉस जो है वो है. Okay. So my stop loss is at uh, let's say 2600, right. let's say यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस है, राउंड ऑफ कर लिया है मैंने 2600 का. सो माई so basically I am willing to, okay, I am willing to lose 220. तो ये कैसे आया? My entry price, okay, my entry price is 2820. My stop loss जो है वो है 2600. So my risk per trade is 220. ओके. नाउ जब भी मेरा रिस्क पर ट्रेड है 220, मेरा मैक्सिमम लॉस लिमिट है इज 5,000 रुपीज. आई विल डिवाइड 5,000. माई मेरा जो मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड जो मुझे लेना है, ओके, डिवाइडेड बाय द स्टॉप लॉस पर शेयर. ये कितना? 220 स्टॉप लॉस पर शेयर. सो 5,000 डिवाइडेड बाय 220. So whatever it comes to, just put up your calculator. Okay. And can you tell me how much is it? 5,000. Okay. Divided by 220. Okay. So I can buy 22.72 or
22 शेयर्स ओनली। ओके, ये मेरा बेसिक रिस्क मैनेजमेंट का रूल है। ओके, तो मुझे देखो, अगर आप एकदम समझते हो कि आप एक बहुत बड़े ट्रेडर हो, खुर्रम खान ट्रेडर हो, तो आप इसको 2% भी कर सकते हो। आपको लगता है कि अ, मुझे 5% रखना है, बट द रूल ऑफ थंब, ओके, इतने साल के जो अनुभव है, रूल ऑफ थंब इज एनीथिंग मोर देन 2%। ओके, एंड यू आर रिस्किंग अ रिस्क ऑफ रूइन। ओके, आपका जो रिस्क है, आपका कैपिटल का रिस्क है, वो बहुत बढ़ जाता है जब भी आप 2% के ऊपर जब भी आप जाते हैं। सो दैट इज द बेसिक रिस्क मैनेजमेंट रूल। ओके, यू कैन ऑल्सो हैव अ पोर्टफोलियो लिमिट के मेरे पास मैं सिर्फ 4 ट्रेड में ही रहूंगा, 4 ट्रेड में मैक्सिमम लॉस इज 1%। तो अगर चारों ट्रेड गलत जाते हैं, यू आर ओनली यू विल बी डाउन बाय 4%, and so on. So this is the basic risk management rule. That is the best that we can do under the circumstances. Okay, please don't ट्रेड विदाउट अ रिस्क मैनेजमेंट प्लान। देखिए, अगर आप नौ सीखिए हो, अगर आपको मार्केट में 2 3 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने हुए हो, आई वुड से डोंट रिस्क मोर देन 0.5% ऑफ द ट्रेड। देखो, मार्केट चलता रहेगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 150 साल पुराना है। ओके, जब तक आप रहोगे, चांद सितारे रहेंगे, जब तक धरती पर मनुष्य है, तब तक स्टॉक मार्केट चलता रहेगा। तो कोई घाई मत करो, आपको बहुत घाई घाई मत करो कि मुझे बहुत शॉर्ट टर्म में मुझे बहुत ही ज्यादा पैसा बनाना है। इट इज नॉट इट इज नॉट सो इजी। आई मीन, द मार्केट्स कैन गेट वेरी वेरी वॉलेटाइल। दैट व्हाट वी हैव सीन इन सितंबर से लेके जो मार्च तक का डिक्लाइन आया था, वो तो सिर्फ 6 महीना ही था। ओके, मिड कैप स्मॉल कैप्स गॉट हैमर्ड बैडली। काफी सारे मिड कैप्स अभी भी न्यू 52 वीक के जो ऑल टाइम है वहां पर नहीं आए। कैपिटल कैन गेट स्टक। द क्वेश्चन इज, शुड यू यूज अ स्टॉप लॉस? आई वुड से इफ यू आर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर, अगर आपका होल्डिंग पीरियड जो है वो एक हफ्ता, अ, एक महीने के, एक या दो दो महीने के से कम है, तो आई थिंक यू शुड यूज योर स्टॉप लॉस। व्हाई? बिकॉज इफ यू डोंट यूज योर स्टॉप, कैपिटल कैन गेट स्टक। आपके पास 5 लाख रुपया है, अगर आपने 4 5 स्टॉक में डाल दिए, 3 साढ़े 3 लाख उसमें इन्वेस्ट हो गए, नई अपॉर्चुनिटीज का आप फायदा नहीं उठा सकते। ओके, अगर आपने 5 लाख इंडेक्स फंड में डाल दिए हैं, या तो फिर कोई म्यूचुअल फंड का स्कीम में डाल दिए है, और वो पैसे को आपको हाथ नहीं लगाना है 2 3 साल 4 साल के लिए, तो मे बी यू मे नॉट यूज अ स्टॉप लॉस। ओके, बट इफ यू आर ट्रेडिंग इक्विटी, इफ यू आर ट्रेडिंग ऑप्शंस, इफ यू आर ट्रेडिंग फ्यूचर्स, please use stop losses, because that is the only way you are going to protect your capital, right? ओके, राइट। सो समथिंग ऑन रिस्क मैनेजमेंट। किसी को अब तक कोई सवाल रिस्क मैनेजमेंट पे कुछ? कैन वी गेट अ रिकॉर्डिंग लिंक? इट्स नॉट इन माय हैंड्स, विनोद अरोरा जी, आई थिंक टॉक टू पेटीएम मैनेजमेंट। ओके, किसी यहाँ तक किसी को कोई सवाल? बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू ऑसिलेटर्स। ओके, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस? राइट, let's go on. Right, so this is something on a trend following tool. There are other uh, indicators also. So maybe something like an MACD. अभी MACD में by itself again there are one basic. So MACD क्या है? It is essentially a difference of two moving averages. Again, a relatively complex indicator because it uses momentum as well as it can be a trend following as well as an overbought oversold indicator also, depending on how you use it.
So MACD, if you look at the parameters, but this is a very, very basic signal that everybody talks about, which I mean, there are other ways of using MACD. तो MACD में क्या होता है? It is made up of three moving averages, 12, 26 and 9. तो ये जो आप ओके रेड लाइन देख रहे हो, दैट इज इट इज कॉल्ड एज द स्मूदनिंग और दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रिगर लाइन. ओके सो और ये ब्लू लाइन जो है दैट इज द एमएससीडी. सो दिस इज आई जस्ट रिमूव द हिस्टोग्राम बिकॉज यू विल गेट कंफ्यूज्ड. ओके okay so this is your MACD line. Okay, so one of the easiest signals that you can take in MACD is just like a moving average. You can just look for prices going above the zero level. Okay, तो इक्विलिब्रियम लेवल है उसके अगर ऊपर जाता है, then probably the price wants to go up again. It is going to have some very same implications as a moving average crossover, but there are certain advantages of using MACD. So this is one of the basic signals that you can take. If you go ask chat GPT, they will tell you that you use a MACD sell signal or a buy signal when the MACD line crosses above the trigger. Okay, और तो जब भी देखो यहाँ पर MACD line is crossing above the trigger. Okay, this gives rise to a very sharp move. ये हर बार नहीं होता. It doesn't happen all the time. It depends on where the price is and how the prices are moving. So, please don't fall for those, fin influencers video जो आपको कहेगा देखो यहाँ पे MACD का कितना बढ़िया सिग्नल आया था. It is all trading in hindsight. होने के बाद सबको अच्छा लगता है, and that is what the type of material that I see on your Instagrams and your Facebooks and wherever there is this social media, where they will just tell you that this happened crossover यहाँ पे and we had this move. But it also depends on the parameters that you are using. Uh, so please be aware of what is happening. Okay, signal line crossover मतलब यही है. MACD is moving below the signal line. This is a possible sell signal. Sometimes it is a short term signal. It can give you some good signals. So we'll talk something on MACD crossover signals when we talk about when you can also use it with options also. That because it is a relatively short term 2 or 3 day signal which you can use for your relatively short term trading. So uh, so basically what we are saying is that whatever systems that you are following, trend following systems, or you are looking at uh, ट्रेलिंग स्टॉप मेथड, हाउ डू यू डिफाइन योर एग्जिट, तो ये सब पहले है ना ट्रेडिंग प्लान पे डिसाइड करो. देन once you have defined your entry and entry signals, then first work on your risk management parameters. आपका रिस्क पर ट्रेड कितना होगा, uh, हम्म, आपका टोटल एक्सपोजर कितना हो सकता है. तो देन वर्क ऑन दैट. Then find some way in which you can locate those signals either manually or you can use a scanner. Use those filters that I have given you, and uh, or and then start taking those very very small signals. See, you don't have need to define your maximum loss as 1%. If you are very very new, I would say 0.5 to 0.25% भी ठीक है. Okay, it's okay, right? Don't ऐसा कोई बोलेगा अरे आप बड़ा देखो, don't fall for it कि आप डोंट फॉल फॉर द फैक्ट दैट कि अरे ये तो बहुत बड़ा ट्रेड करता है और मैं तो बहुत छोटा ट्रेड करता हूँ. लोगों देखो काफी लोग जब सोशल मीडिया सर्कल में जाते हैं ना, तो मतलब बड़ी बड़ी बात करने को काफी लोगों को बहुत अच्छा लगता है. बट देन डोंट प्लीज डोंट फॉल फॉर इट. एनीवेज, राइट? सो this is something on MACD. Now I will go to what we call as oscillators. Again, a very different type of a signal. Okay.
So I have right. So now basically, what is an oscillator? So we have just talked about moving averages and late signals. मैंने ये cover किया. So oscillator or momentum indicator. So oscillator में क्या होता है? It is a bounded indicator, right? So indicator is a generic term. Within indicators, we have different types. So we have oscillators, we have momentum indicators. Right. So now oscillators क्या करेगा? Oscillator will move in a range. At least most of the oscillators, जिसे हम देखो oscillators में दो प्रकार के होते हैं, bounded और unbounded. MACD जो मैंने आपको दिखाया, it can be, it can also be, it is an unbounded oscillator क्योंकि उसमें upper या lower level का कोई limit नहीं होता है. But something like RSI, okay, it is a bounded oscillator. तो उसमें क्या होगा? RSI will always remain, no matter how the prices are going, it will always remain between 100, okay, and 0. ठीक है. तो ये यूजुअली ऑसिलेटर्स का यही रेंज होता है. ओके, 100 और 0. ओके, सो वहां पर दूसरे वैल्यूज आती है. तो you have other values also. So the other values could be what we call as an overbought zone, okay, and we have something called as oversold. Okay. So RSI is a default look back period is at 14. Now I will explain you this, what is overbought, oversold, what is look back period. For that, we'll have to go to the chart. Okay, so I'm going to change the screen. Okay. Now we are going to look at, so what I am going to do is that I am going to remove moving averages. इसको मैं, I will just keep MACD for the time being. Now we'll plot RSI. So we'll look at what the parameters are. Okay. So RSI I have plotted. Let's go inside RSI. और ये सब numbers का मतलब क्या होता है? So RSI मैंने आपको कहा था ना, the default value is always 14. Why? Because जो आदमी ने RSI की रचना की थी, जो डिस्कवरी किया था, जीनियस आदमी था, उसका नाम था वेल्स वाइल्डर. So he was the one who came up with this term called RSI. RSI matlab relative strength index. What it shows is how strong the price is relative to its recent performance. So 14 दिन का is a look back period. तो RSI क्या करता है? It takes the value of the latest close और 14 दिन का प्राइस जो डिफरेंशियल है उस पे कुछ मैथमेटिक्स करता है एंड यू कम अप विद दिस इंडिकेटर. नाउ आई एम नॉट गोइंग इनटू द कैलकुलेशंस बिहाइंड आरएसआई. इट कैन बी कॉम्प्लेक्स. So usually what people do is that we use it on that we use the default values in RSI 14 and that is the default value. You can also play around with this value. अगर आप इसको बढ़ा भी सकते हो, इसको कम भी कर सकते हो. तो अगर मैं इसको बढ़ाता हूं और 14 का मैं अगर let's say 21 करता हूं, okay, what you see is that this slope it becomes slower. Okay. तो इसके भी यूजेस है, ऐसा नहीं कि नहीं है. सी, और अगर इसको मैं 7 करता हूं, right, see, if I am doing this as 7, you find that it is a more sensitive oscillator. Okay. Okay. So, right, so default values, what we are talking about is 14 period, right? और ये जो येलो लाइन देख रहे हो ना, तो a it is a moving average of RSI. ओके, तो अगर हम यहाँ जाते हैं तो मैंने आपको कहा था ना, इंडिकेटर वैल्यूज कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड on different uh, okay, indicators values can also be calculated on the indicator itself.
Okay, so this is this is an example, but we are not going to use it. So I am just going to uh, remove this. Right now, what we have here, they are numbers. So मैंने आपको कहा था, अरे, so I'll just remove. Okay, okay, sorry. Before overbought, oversold, जो बाउंडेड और अनबाउंडेड था ना, मैंने आपको कहा था कि मैं इस पे हम बात करेंगे. तो सी, बाउंडेड का मतलब क्या होता है कि ये 100 के ऊपर नहीं जाएगा. कैसी भी प्राइस मूवमेंट, कितना भी बड़ा तेज मूवमेंट आ रहा है, इट विल नॉट गो बियॉन्ड 100. MACD कैन टेक एक्सट्रीमली हाई वैल्यू. सी, MACD का कोई ऊपर की साइड का लिमिट नहीं है. RSI is also always bounded. Okay, we can also use this as uh, you know as we can generate this property of using different oscillators to come up with buy and sell signals. Okay, so I'm just I hope you have got this difference between bounded and unbounded. Theoretical है, चार्ट बुक्स में इसका जिक्र होता है. Whatever I am telling you is based on classics that have been written by a lot of people over the years. Now, so the first thing is, when you see what is meant by an overbought or oversold. See, overbought मतलब जब भी oscillator value is above 70. Okay. That's it. जब भी oscillate price, see, price doesn't get overbought. Okay, it is the oscillator. तो अगर कोई आपको कहता है ना कि प्राइस ओवरबॉट है, प्राइस ओवरबॉट नहीं होता है, ऑसिलेटर ओवरबॉट. ठीक है, तो प्राइस का ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि आप वो कहाँ तक ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है. ठीक है, सो नाउ फर्स्ट थिंग इज व्हाट यू नोटिस इज दैट मोस्ट ऑफ द टाइम, okay, most of the time, once price hits overbought zone, okay, it can stabilize for some time. Okay, देखो, यहाँ पर ओवरबॉट, स्टेबिलाइज, overbought, stabilize, okay, overbought, okay, and there was this decline in price. देखो, now, okay, there are other overbought, oversold oscillators also, like stochastics भी है, और what else, money flow index भी है, and so on. Okay, oversold मतलब क्या? Price below 30, it means that it is an oversold territory. Oversold territory का मतलब क्या है कि प्राइस काफी नीचे आ गया है, एक डेफिनेट शॉर्ट टर्म बाउंस आना चाहिए. ओके, या प्राइस इमीडिएटली ओवरबॉट है, तो आई शुड एक्सपेक्ट एटलीस्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ करेक्शन. करेक्शन मतलब थोड़ा काउंटर ट्रेंड मूवमेंट आएगा. इट इज नॉट गोइंग टू टेल मी कि प्राइस इज गोइंग टू, it doesn't mean, not necessarily mean that prices will start a major decline. 2-3 दिन का डिक्लाइन आ सकता है, आप चाहे तो उसमें ट्रेड कर सकते हो. तो अगर हम, बट ओके, सो ओके, सो ओवरबॉट ओवरसोल्ड को हम कैसे यूज कर सकते हैं? वन थिंग इज दैट ओवरबॉट ओवरसोल्ड में अगर आपका स्टॉक है, तो आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि इसमें एक छोटा सा करेक्शन आ सकता है. क्या आपको उस करेक्शन पे ट्रेड करना है या आपको अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट करनी है? दैट डिपेंड्स ऑन योर ट्रेडिंग प्लान. पर्सनली आई डोंट रेकमेंड सेलिंग शॉर्ट जस्ट बिकॉज द प्राइसेस आर इन एन ओवरबॉट जोन. इट हैपेंस, काफी बार ऐसा भी होता है दैट फ्रॉम ओवर सोल्ड वैल्यूज, ओके, प्राइसेस कैन स्टार्ट टू मूव अप रियली फास्ट. काफी बार ये भी होता है कि price will hit an oversold zone and immediately turn. Okay. Now, one of the ways I use oversold is I will use oversold values, okay, and try to locate nearest support or resistance. अगर price
इंडिकेटर ऑसिलेटर ओवरसोल्ड है, ओके, और प्राइस सपोर्ट लेवल पे है। देखिए, टेक्निकली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टू मेक अ जजमेंट कि प्राइस का मेजर सपोर्ट एरिया पे कौन से स्टॉक्स है। ओके, what you can do is that you can simply scan for RSI in oversold territory, and you can manually start to look whether the prices are at a support. So yeah, not a very well defined support, but definitely there was a support zone here. Okay, classic case, jo, I mean, I didn't take this trade, but it happened in Asian Paints. Okay, see, see, price hit overbought here. Okay, and it was at a resistance level. Okay, now see what happens. Price is overbought and we are at a resistance level. Okay, right? So this is a great combination at times that we could get at least a short term 2 or 3 day correction. Overall market trend is up. So we have to be very, very sure whether we want to take this sell signal. Okay. मार्केट सी देखो, निफ्टी है जो देखा था ना, दे आर एट अ न्यू हाई, दे आर एट अ न्यू ऑर्बिट। ओके, सो वी हैव टू बी वेरी श्योर। देखो, अगर ट्रेड लेना है ना, तो मैं छोटा ट्रेड भी ले सकता हूँ, बट आई सी नाउ व्हाट एम आई डूइंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अलाइन indicator overbought oversold with support and resistance levels. Okay, maybe we can, let's say, let's just maybe something like, see, uh, see, these are rare signals, आपको उतने ज्यादा नहीं मिलेंगे unless you manipulate your, see, RSI overbought over here, and it aligns with a prior resistance level. See, okay, sometimes maybe 3-4 times out of 10 you can get an exceptionally strong move. Okay, यहाँ पर see, prices are at a support but RSI is not oversold. Here RSI is oversold, okay, but prices are not, they are nowhere near a support zone. आप समझ रहे हो? Are you with me? See, indicator is oversold. That is a beautiful signal. We'll come to this signal. See, ये जो signal है यहाँ, see, indicator is oversold and we are very near to a major support. See this. Okay, so these are rare signals. If you if you can pick them out, there are, these are some ways of trying to buy near the bottom. Okay, now uh, another signal that is used in RSI is what we call as a divergence. Okay, so this is a this is a copybook example. ये है ना, देखो अभी जो मार्च में जो बॉटम आउट हुआ था ना मार्केट, तभी यू हैड अ लॉट ऑफ दीस टाइप ऑफ सिग्नल्स। काफी सारे ये जो सिग्नल्स थे ना, वो आपको ये बॉटम आउटिंग पैटर्न में मिला था। ओके, सो नाउ सी, what is a positive divergence and what is a negative divergence? Okay, good quality positive negative divergences are rare. Okay, now पॉजिटिव डाइवर्जेंस में प्राइस जो है ना, सी, ये, नाउ लुक एट दिस इज अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस। सी, लुक एट दिस लो हियर एंड कंपेयर विद दिस लो हियर। नाउ लुक एट दिस, ये जो लो है, थोड़ा मैं जूम कर, एक मिनट आई होप, या
See. Now see what happens. This low, look, I just remove this. This low and this, see, ये जो है, this is the recent low, वो अगले low से नीचे है. See, but see what the oscillator is doing. The oscillator is not making a new low. Okay, this is what is called as a positive divergence. Okay, ये है positive divergence. तो वेल्स वाइल्डर ने जो okay, so okay, वेल्स वाइल्डर ने जो ये सिग्नल कहा था, that this is what he called as a positive divergence. Okay, we can go deeper into this in what is positive and negative divergence. But this is the basic signal. See, oscillator में अगर आपको काम करना है, I would say look at overbought, oversold signal. It is very difficult to pick it out in initial stages. This has this beautiful facility of you can simply take this and calculate divergence, right? See, this is a classic divergence. ये सब ठीक है. Okay, this is what Wells Wilder ने उसकी किताब में लिखा है. Okay, this is again a negative divergence. Price makes a new high, and there is this decline. You can also plot RSI पे आप you can plot trend lines and so on. Okay, guys. So any questions? I think so. We have talked about oscillators. We have talked about moving. I would say stick with moving average. If you are a beginner trader, stick with moving averages. Follow a plan, and you are on your way to consistently profitable trading. And this is what our aim is. Tomorrow, when we go into options, we will talk something more on volatility, and there I will discuss on what actually volatility means, because that's what it is, right? Any questions, anyone? Before I any questions? किसी का कोई प्रश्न? Okay, thank you, Manish. एक काम कर सकता हूँ. Tomorrow we are going to continue with this session. तो जो भी क्वेश्चन है आप लोग का मन में, प्लीज राइट इट डाउन, टेक ए नोट ऑफ द क्वेश्चंस, एंड टुमारो वी कैन डिस्कस. आप आज चार्ट देख, प्लीज गो ahead and look at your charts, and we are going to continue, and don't forget to join at 4:30 exactly. So Manish, thank you so much. Okay, and please everybody, please come tomorrow. Please tell your friends to join, because we will be talking something on options buying and option selling. We'll talk about various modes in which you can initiate a buy signal and so on. So we are going to talk about very important concept of volatility. So right, so please make it a point to come tomorrow, right? And or thoda look at your moving average signals. It will be better for us. Yeah, Please, so, help me in making you a better trader. मैं अकेले एक हाथ से ताली नहीं बजाता. ठीक है? चलो, thank you Okay, Manish, चलो, and bye guys. Have a great evening ahead and see you.